Hello everyone and welcome back to FINCRADLE. This is Naman Jain, co-founder of FINCRADLE, and in today's video we are going to talk about the most important and relevant skills which are necessary for every finance enthusiast who is already in the process of becoming a professional or about to start their journey in the same domain. किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एप्ट स्किल्स एंड नॉलेज। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है उस इंडस्ट्री के लिए, नॉलेज नहीं है, तो चाहे कोई भी सेगमेंट हो, यू विल फेल एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडवे हो, चाहे आप वहाँ तक पहुँच भी जाओ बट शायद उस लेवल से ग्रो ना कर पाओ जो आप एप्ट स्किल्स लेके कर पाओगे। और आज की डेट में इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डायनेमिक है कि जो स्किल्स आज से 5-10 साल पहले रेलेवेंट इंपॉर्टेंट थे, आज नहीं है, और आज से 5-10 साल बाद वो स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो आज इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इंडस्ट्री इज गेटिंग वेरी डायनामिक। टॉकिंग अबाउट टुडे स्ट्रक्चर, एक इंडिविजुअल को अपने स्किल सेट में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ नॉलेज ले लें, स्किल्स ना लें, क्योंकि पहले एक इंसान एक काम करता था और थ्रू आउट द लाइफ वही काम करता रहता था। बट इन टुडेज टाइम कॉम्पिटिशन इज सो टफ, यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल, you have to be expert in multiple domains. So it's really important for everyone out there to work more on skills alongside their knowledge. And this is what we are going to cover in today's video. So starting off with the list, the most important and initial part is your knowledge. कि आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसकी कितनी नॉलेज आपके पास है, एंड नॉलेज का प्रूफ क्या होता है? ईदर अ डिग्री और अ सर्टिफिकेशन। सो टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, CFA, FRM, MBA Finance, yeah, आजकल there are a lot of new courses, not new courses but courses which are highly valued at the graduation level, right? For example, BBA FIA from Shahid Sukhdev College of Commerce. This is a very amazing course. So चाहे आप इनमें से कुछ भी कर लो, these are your benchmark for your knowledge in the field of finance. एंड इनमें से आप चूज कैसे करोगे? एज पर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो। इफ यू वांट टू वर्क इन रिस्क मैनेजमेंट देन यूल गो फॉर FRM, वांट टू बी एन एनालिस्ट और गो इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देन CFA, वांट टू रीच टू द टॉप लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री या ऐसा कुछ देन MBA फाइनेंस, और BBA भी आजकल बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स देने लगे हैं, राइट? सो एज पर योर इंटरेस्ट यू विल चूज विच ऑफ दीज कोर्सेज यू हैव टू डू। एंड व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, सो जो आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी वो आपके नॉलेज के बेसिस पे ही होगी, right? Because when you write in your CV or when you read a job description, when you see what are the qualifications required, वो specifically mentioned होता है कि या तो CFA अप्लाई कर सकते हैं, या MBA अप्लाई कर सकता है, या FRMs अप्लाई कर सकते हैं, right? So you should have that benchmark in your profile, तभी आप उस चीज़ के लिए eligible हो पाओ। उसके बाद बात आएगी कि आप में relevant skills हैं या नहीं है। Now let's talk about what are the most important skills which you need. So first category is interpersonal skills. So what are the interpersonal skills? Interpersonal skills are those skills which are related to your personality. It is the most important factor because आप कितने भी knowledgeable हो, कितने भी dedicated हो, आप अगर अपनी skills को या अपनी knowledge को present नहीं कर पाओगे confidently, then it will be really difficult for you to exist in the industry. So that is very important. Your personality should be bold, your personality should be confident, your communication skills should be really good. So when you work, आपको बहुत सारे high level clients के साथ काम करना पड़ता है। At that particular point of time, confident होना, personality में boldness होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मतलब confidence आता कैसे? When you are apt with your communication skills, जब आपको ये लगता है कि हाँ आप काम से कोई भी चीज़ communicate कर सकते हो। But this is not restricted to communication only. There is one more part which is known as emotional quotient. Emotional quotient is the new thing you can say which is really important, क्योंकि आप stress situation में, pressure zones में किस तरीके से positively अपनी टीम के साथ communicate करके, manage करके एक positive impact ला सकते हो, that is what defines your emotional quotient. And stress situations में ही test होता है आप कितने strong team player हो, right? So these are your interpersonal skills. Next is problem solving skills. Your mind should be a problem solver, right? Because whenever clients come to the company, if you're a consultant or you're a front end investment banker, so you deal with clients. When you deal with clients, they come up with a higher level of complex problems which needs a tailored solution for them.
आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई चीज़ पहले से पढ़ी हुई है या आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो तो वो सॉल्यूशन आप उनको दे सको. इट इज़ नॉट नेसेसरी इन ऑल ऑफ द केसेस. कुछ क्लाइंट्स ऐसी प्रॉब्लम लेके आएंगे ही आएंगे जिसका एग्जिस्टिंग कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जिसके लिए एक नया सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा. सो योर माइंड शुड बी इन दैट कैपेबिलिटी कि वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट इज योर नॉलेज ऑफ एनालिटिकल स्किल्स. So now the point to focus on is analytical skills which have to be combined with your knowledge and as per your segment of industry जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो. लेकिन एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में चाहिए, दैट इज एक्सेल. योर नॉलेज इन एक्सेल शुड बी एटलीस्ट फ्रॉम इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल. यू शुड बी एबल टू सॉल्व फंक्शंस लाइक VLOOKUP, HLOOKUP, offset, CSC, pivot, etc. These are really basic functions which you must be thought about at least. Apart from that, you should also have basic understanding of coding languages like Python, Java, MS SQL, right? These are also very important. Tableau, right? So बहुत सारी career opportunities ऐसी होती हैं जिसके लिए basic knowledge, which we have already discussed, and some level of these skills are required. So अगर कोई CFA के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी भी और फाइनेंस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, एडवांस्ड एक्सेल इज समथिंग which everyone should own. राइट, अगर आप कुछ रिस्क प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जिसके लिए दे डू रिक्वायर, द कंपनीज डू रिक्वायर योर अंडरस्टैंडिंग इन दी कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड आर. Right, so if you are able to merge your knowledge with such set of skills, then you'll surely be able to get a decent job in the industry. Many students come to us and say कि सर FRM qualified है but job नहीं मिल रही, CFA के 1-2 लेवल कर लिए हैं but job नहीं मिल रही. So this is the main reason you are lacking the required skills. If you combine the skills alongside your knowledge, you will definitely be able to get a decent job. And always remember, एक बार job मिल गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि your learning should stop. और जो job में हो रहा है that is something which you have to focus on. जो job में हो रहा है वो तो करना ही करना है. Apart from that, learning should never stop. You should always strive to learn more and develop your skills so that any further challenge which might arrive in the future, जो भी uncertain है but शायद future में आ सके, you should be ready for that. राइट, कोई रिसेशन आ जाए तो आपकी स्किल्स इतनी हो कि कंपनी के लिए आप एक एसेट हो और आपको कंपनी किसी भी केस में लूज ना कर पाए. ऑलराइट, सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज सेट ऑफ स्किल्स इफ यू आर विलिंग टू एक्सेल इनटू एनी पार्ट ऑफ फाइनेंस करियर. लाइक फर्स्ट इज योर नॉलेज. Your knowledge will be defined by courses like FRM, CFA, MBA Finance. Then your interpersonal skills, which is your communication, confidence and emotional quotient. Next is your mind's ability to solve complex problems. And the last is your knowledge of analytical skills, MS Excel, coding languages, etc. Alright, these are the most important aspects. Thank you for watching the video. Do like and subscribe it. I hope this will really help you for a lot of people around your network. Right? And in case you need any further help, you can contact us with the link in the description box. Thank you.